connected to the Creative School, Bangalore. We have Dr. Jayashree Ashok Madam, Namaste, founder and director of Prajna Wisdom Center and Creative School. Welcome, Madam. We also have with us Dr. Radha Ghanagam Madam, who is program advisor for the 11th and 12th graders at Creative School, Bangalore. Welcome, Madam. I would like to give a brief introduction of our resource person, Dr. Jayashree Ashok Madam. She is the founder and director of Prajna Wisdom Center and Creative School, Bangalore. Under her leadership, Creative School was positioned among the top 20 schools of Bangalore within its first 7 years. She has also set up organizations in India and the US, evolving each of them to become change makers. Dr. Jayashree is a spiritual teacher with 20 plus years of experience. She has trained and mentored thousands of individuals, children, teachers, parents, and professionals to build them lead conscious and fuller lives, reaching their full potential. She is an expert in energy healing, meditation, conscious parenting, non-violent communication, inner child work, regression therapy, mindfulness, wellness, and with 5 elements, rebirthing, breath work, art therapy, mind-body awareness, other forms of energy healing, and quantum science processes. She has recently authored a book on cultivating emotional intelligence and well-being. A brief introduction on Dr. Radha Ghansham. Dr. Radha Ghanagam is the program advisor for the 11th and 12th graders at Creative School, Bangalore. She has 10 plus years experience in supporting children and adults in emotional well-being. She has trained in emotional intelligence, compassionate communication, inner child work, rebirthing, breath work, sacred classroom, and conscious parenting. She actively engages as therapist at Prajna Center facilitating workshops, as well as one-on-one sessions. She also teaches chemistry and co-teaches the Team Circle program for the 11th and 12th graders. She is an MPhil in inorganic chemistry and has done her master's in analytical chemistry. Welcome, madam, to our session. I would like you to start the session. Thank you, madam. And thank you and hello to all of you from Bangalore. I will be speaking in English and Hindi, and Radha ma'am will be speaking in Hindi. And we are also happy to, we have some friends here who are very happy to also translate into Odia as necessary. Yeah. So warm welcome today. We're very grateful to all of you that we have an opportunity to share what we believe is one of the most important topics for us in our education as well as in our success in life. समस्तों को नमस्कार. So भावनात्मक बुद्धि, emotional intelligence, ये very बहुत ही important subject है, topic है, जिससे कि हम अपनी जिंदगी और खुशी से, खुशहाली से बिता सकते हैं. We are very happy to get this. ये एक opportunity मिला है हमको, हम बहुत ही कृतज्ञ हैं to the government of Odisha and to the Department of Higher Secondary Education. Thank you. Emotional intelligence is going to directly determine your success in life. तो हम जितने हम बुद्धि होती है हमारी भावनात्मक बुद्धि, इससे हमारा लाइफ और भी सफल होगा और सफल होगा हमारा जीवन हो. In school, in college, we learn many skills, we learn many subjects, but to be successful in all of this, we need emotional intelligence. मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ हमें शिखुछु, बट एबे भावनात्मक बुद्धि जदि हमको भलो करी आसिले हमरो जीवन आउ सफल होबो. We'll go ahead and start our presentation now. Yeah. So, yeah.
As we're getting our presentation ready, I just want all of us to close our eyes and just spend 1 minute completely relaxing in meditation. Just close your eyes. ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି just ଟିକେ ଆପଣ slowly breathe, ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଛାଡନ୍ତୁ। For 1 minute, just completely relax. Relax your shoulders. 1 मिनट के लिए सिर्फ अपना अपना shoulders relax कीजिए। And observe your breath. पूरा ध्यान आप अपने श्वास पे दीजिए। ଆପଣ କେମିତି ଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶ୍ୱାସ फोकस କରୁଛନ୍ତି। ध्यान आप अपने ब्रीदिंग पे रखिए। Slowly, let's come back and let's begin. Students, ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? Is everybody? Please raise your hands. Please raise your hands. It's not audible at all. It's not audible. Those who cannot hear from this end, please see to the technical person. ଆପଣଙ୍କ school college Are you able to hear me, ma'am? Are you able to hear me? It's audible to us. Okay, great. Yeah, please take some time to just adjust your sound and your screen. Okay, shall we begin? Okay. Thank you. So, emotional intelligence is a very important topic today. And it is something that is becoming very prevalent in society, in workplaces, in corporations, in schools, as well as in colleges. So let us look at what emotional intelligence is. The title says it's the capacity to observe, manage, and learn from your emotions. तो हम जो सीखते हैं स्कूल में, जैसे 11th और 12th में आप पढ़ाई कर रहे हो, सब्जेक्ट्स हैं, उसके ऊपर हमको भावनात्मक बुद्धि, जो हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि ऑब्जर्व मतलब हम कैसे समझते हैं, भावनाओं का निरीक्षण करना, देखना, चिन्ह पारना, ओके, मैनेज करना मतलब उसको संभालना, और जब हमको कोई भावना आता है, कोई फीलिंग आता है, हम उससे क्या सीखेंगे। आप सब शायद ये जानते हैं इमोशंस क्या है। If any of you have an answer, please write in the chat window. आपके समझदारी में इमोशंस क्या है, भावनाएं क्या है? What are emotions? आंसर तो है स्क्रीन में, फिर भी ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस कौन अच्छी what फीलिंग। are what are positive emotions, what are negative emotions? Can you give some examples? Positive emotions, negative emotions, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव फीलिंग का एग्जांपल देंगे आप, उदाहरण देंगे? और नेगेटिव फीलिंग्स का भी उदाहरण? Very good. Okay. Okay. Yes, very good. Very simply put, emotions are generated in our body. ये पहले हमने सोचा था कि emotions are not real, पर आजकल research has shown that emotions are generated in our body in response to either external or internal stimulus. So कुछ घटना हो रही है जो
हमारे शरीर में इमोशंस आर जनरेटेड। तो अगर हम किसी घटना का अनुभव करते हैं, ठीक है, कुछ अगर हम हो रहा है हमारी जिंदगी में, स्कूल में, टीचर्स के साथ, घर में किसी के साथ, तब हमारे अंदर कुछ भावनाएं आती हैं। ठीक है, ये भावनाएं पॉजिटिव हो सकती हैं जैसे आपने लिखा है, और नेगेटिव। जैसे आपने क्रिकेट मैच में एक सिक्सर देखा जब इंडिया बैट कर रही है, आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस होगी। व्हेन इंडिया लूजेस क्या होता है? Yeah, we have negative emotions, right? Yeah, just like that. Sometimes when we get good marks in an exam, we have positive emotions. But when we don't do well in an exam, we have negative emotions. When we go, maybe later as you all grow up, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपको एक जॉब मिला तो आपके अंदर खुशी होगी। But if you don't get a job, then you may be sad or you may be disappointed. So positive emotions are generated in our body. We experience something positive, a positive incident, a pleasant incident, not only outside us, but also our thoughts. जब हमारे अंदर positive thoughts होती है, हमारे शरीर में positive emotions हम experience कर सकते हैं। जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स होता है, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस जनरेट होती है हमारे शरीर में। तो बहुत बार जब हमारे डिफरेंट इंसिडेंट घटनाएं होती हैं, हाँ, बहु घटना आंतरिक घटना किछि हेले तेबे घरे होबो, ओके, तेबे कौन होची इमोशंस आसीबो। समटाइम्स इट इज, कभी कभी वो हैप्पी, जैसे मैडम बोल रही थी, खुशहाली हो सकती है, खुश हो सकते हैं, कभी कभी हम दुखी होते हैं। तो ये सब हमारे अंदर से ही आता है, जो भी हो रहा है बाहर। सो पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस को हम एक ट्रैफिक लाइट जैसे समझ सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस आर लाइक ग्रीन लाइट, नेगेटिव इमोशंस आर लाइक रेड लाइट। कैन वी हैव ओनली ग्रीन लाइट? क्या होता है एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन में सिर्फ ग्रीन लाइट है तो क्या होता है? तो गाड़ी चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। सब डायरेक्शन से चलता रहेगा। सो क्या होता है? शायद एक दुर्घटना हो सकती है। हाँ, तो दोनों चाहिए हमारे हमारे शरीर के अंदर। पॉजिटिव इमोशंस आर लाइक अ ग्रीन लाइट, वो बोलती है हमें आगे जाओ, जो भी करना है करो। नेगेटिव इमोशंस आर लाइक रेड लाइट, वो हमें सिग्नल करती है कि स्टॉप एंड लुक एट द ट्रैफिक। आपके अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। सो तेबे किछि घटना हेले, खुशी हेले, वी फील पॉजिटिव ना, हमें आगे बढ़ते रहते हैं, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर हमें मन में कुछ दुखी होगा, तब हम थोड़ा स्टॉप करते हैं, सोचते हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे सब विचारे आते हैं। हाँ, तो व्हाई डू वी नीड इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस इसका शॉर्ट फॉर्म है EI। EI helps us understand and manage our negative emotions. हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव इमोशंस भी महसूस होती है और नेगेटिव इमोशंस। EI के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, हम नेगेटिव इमोशंस की ठीक तरह से संभाल सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं। People who are usually successful are more confident. They utilize positive emotions and are able to overcome negative emotions. যদি লাইফ রে কিছু প্রবলেম আসুছি, हाँ, तेबे जैसे माने जमाने सफल होचंती, वो क्या करते हैं कि नेगेटिव इमोशन को संभाल के उससे ऊपर उठते हैं। हाँ, तो लाइफ में दोनों तरह के इमोशंस है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो सक्सेसफुल पीपल, सफल लोग जो हैं, वो नेगेटिव इमोशन से भी ऊपर उठते हैं। ठीक है। नमस्कार मिस्टर आयर।
Iyer sir, namaste. Namaste, good morning. Good Good morning, morning. sir. Uh, Before I speak something on this, I would like to tell my students, first of all, the background of Pragya Vidya and Creative School. उपस्थित थिबा समस्त प्रिंसिपल्स एवं स्टूडेंट्स, क्रिएटिव स्कूल गोटे भिन्न रकम स्कूल बेंगलुरु रे एवं आमे मु पाखापाखि 2 वर्ष तले से स्कूल को जाइथिली हमर गोटे टीम विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ आमे गोटे टीम जाइथिलु एवं से स्कूल दिने 2 दिन बुलिकी आसिलु स्कूल रो टीचर्स स्कूल रो स्टूडेंट्स मानक संगे आमे इंटरैक्ट करिकी आसिलु स्कूल रे मात्र सेही समय रे 250 पिला बोधे पढुथुले टीचर्स किंतु पाखापाखि 25-30 जन खंडे थिले सो प्रत्येक क्लास रे अल्प पिला थिले 1-to-1 इंटरैक्शन पई सुजोग थिला एवं एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ लर्निंग जोटा सेठी आमे महसूस करिलु आमे देखिलु एवं ता परे परे एठी विभिन्न टीचर्स मानको 2021 मसीहा रे कोरोना पीरियड परे परे विभिन्न प्रोग्राम हमर करागला भुवनेश्वर रे करागला एवं हमर जो टीचर्स अछंती टीचर्स मानको एई ट्रेनिंग उपरे हमें विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेलु एवं सेई टीचर्स माने भी विशेष करे हमर ओडिसा आदर्श विद्यालय रो टीचर्स एवं भुवनेश्वर रो आखापाखी जेतिक प्राइमरी आ हाई स्कूल्स अछि सेई स्कूल्स रो जो टीचर्स माने आसिकी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिथिले से माने सेमानकर स्कूल्स को जाई कि ताको पिला मानको पढ़ेले सिखेले सेक्रेट क्लासरूम्स उपरे मेंटल वेलबीइंग उपरे तेणु एटा टीचर्स मानको भी प्रभाव पड़िछि से भी भाबिले जे एटा ताको पई एटा ताको निजो पई प्रथम थर पई से भाबिले जे टीचर्स मानकर जो ट्रेनिंग हेला से भाबिले ए ट्रेनिंग ता आमो पई आमो निजो पई आमो निजर मेंटल वेलबीइंग आ हेल्थ पई जो थेरे कि आमर मेंटल वेलबीइंग रहिले आमे जे कोनसी भी जो काम करूछु आमे सेथरे पूर्ण भाबरे 100% आमर देकी आमे काम करि परिबा सो सेई जो एक्सपीरियंशियल टाइप ऑफ लर्निंग ताकर हैला सेटा भी गोटे पॉजिटिव वे रे से माने पिला मानक पाखु को नेकी गले एवं पिला माने भी तादरु बहुत उपकृत हेचंती सेति पई मु मैडम आई वुड थैंक यू फॉर addressing a session for our students and in today's world I think all the students will agree with me that there is so much time being taken by our mobile phones by so much of knowledge being given by in the cyber world that we don't know what is right and what is wrong. Yes. As a child, I think, or a student or anybody, even adults, we don't know whatever we are seeing on the information world, whether it is right or wrong, somewhere we don't know. So it is time we reflect what is right, what is wrong, what is good for me, what is not good for me. And these students, I think they will benefit a lot from your session so that we think what is correct for us, what is positive for us, and what is going to give us happiness and lead us to our goal. Yes. Thank you so much, ma'am, for addressing our students. Yeah, thank you, sir. I think like you rightly pointed out, in today's world, all of us as students, as teachers, as administrators, need to evaluate what will keep us positive long term. Yeah, sometimes we may sit and watch something on social media for many hours, and at the end of which, we are not left with a positive long-term impact. So emotional intelligence also includes making the right choice for ourselves. Making how do we choose so that we have good long-term positivity in us. And that is going to determine your success.
It is not just the short-term goal, but also the long-term goal that you have. And for that, emotional intelligence, paying attention, discernment is very, very important. सो मैडम ऐसे बोल रहे हैं कि जो लाइफ में हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं, मतलब जिंदगी भर का जो हम सोच सकते हैं, दैट्स अ लॉन्ग टर्म, और अभी जस्ट 10th-12th एग्जाम, फर्स्ट ईयर कॉलेज, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। तो हमारे इस इंटेलिजेंस के साथ हम जीवन को पूरी तरह से सफलतापूर्वक जी सकते हैं। Okay? Yeah. So let us look at both some simple examples of emotional intelligence. Yeah. You all know this. If a very afraid or scared person is going for an exam, आपने आपका टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह सीखा है, फिर भी आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एग्जाम के लिए जाओगे, नहीं तो बाद में आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, या कैन यू बी सक्सेसफुल? যদি ভয় মারিলে, अगर डर लग रहा है आपको एग्जाम के पहले जाते वक्त या इंटरव्यू जाते वक्त, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करेगा, आइडियाज भी नहीं आएंगी, आंसर्स भी हम भूल जाएंगे, नहीं तो इंटरव्यू में ठीक से हम बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो जब डर लगता है तब हम ठीक तरह से लिख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, है ना। So in addition to your subjects, in addition to preparing, you also have to prepare your mind. You have to look at your mental well-being, and that comes through emotional intelligence. तो पढ़ाई करना है, ओके, जो भी हमको रिवीजन करना है, पढ़ा पढ़ी सभी दरकार अच्छी, बट आमरो चिंता, आमरो भावना केमती अच्छी, जो भय मारिले आमे किछि बेसी भलो करी लिखि पारिबुनु, सोची पारिबुनु। So a confident and positive thinker is the person who is going to be successful. तो अगर हम बिना डरे, अगर हम पूरे जोश के साथ हम लिखते हैं या एग्जाम में, इंटरव्यू में बात कर पाते हैं, तब हमारा सक्सेस, हम और सफल हो पाते हैं। Now it is very simple for us. Once we start paying attention and become aware, हमारे अंदर जब negative emotions है, it's a natural part of life, हम उसको कैसे संभालें, उसको कैसे हम transform कर सकते हैं। We will share with you a few simple techniques that you can use when you are experiencing a negative emotion, how to transform that. तो जब अगर हमें कुछ लगता है कि कुछ नेगेटिव हो जाता है, डर लग रहा है, कि लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ता, मुझसे होगा नहीं, तो जब ये सब ऐसे हमारे सोच हैं, जब ऐसे सब फीलिंग्स हैं, हम आज सीखेंगे कैसे उनको चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे बदलें अपने नेगेटिव इमोशन से, हमारे दुख से या डर से। So हमें ये सीखना है कि कैसे ये इमोशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। पहले थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस वी हैव टू ग्रो। सो पहले हम अभी आप देख लीजिए आपके अंदर क्या विचार चल रहा है और आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन। पहले उसको कैसे ऑब्जर्व करना सीखेंगे, उसके बाद कैसे उसे मैनेज करना। ओके, एंड इससे हम हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस है उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं। सो केमती हम निरीक्षण करिबो जदि हमारे किछि भावना अछि। सो फर्स्ट स्टेप, गोटे फर्स्ट स्टेप कोन अछि, केमती निरीक्षण करिबो, केमती बुझिबो ओ मते एमती लागुछि, कोन होछि मोरो दिमाग रे, मु कोन भाबुछि। Observing and noticing emotions, observing these emotions. There are actually today science is showing that negative emotions have molecules and these stay in different parts of your body. So observing where in your body you're feeling it, observing your breath and noticing your emotions is the first step. सो जदि किछि नकारात्मक भावना थिले, हाँ आपण बुझी पारुछि नकारात्मक, टिके चैट विंडो रे लिखि दियंतु, नकारात्मक भावना कोन हो सेंता, किछि एग्जांपल अछि। ओके, जदि सेमती थिले, जदि आपण किछि दुखित थिले और किछि सैड थिले, आपण करो समटाइम्स हेडेक होबो, हाँ,
और बॉडी सेंसेशंस मतलब जब हमको अपने बॉडी में लगता है, कभी कभी हमारा हार्ट बीट जल्दी हो जाता है, ठक 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 ठक, कभी कभी पसीना छूटता है हाथ से, है ना, ये सब बॉडी सेंसेशंस है। So you can observe emotions, body sensations and आपके सांस के ऊपर ध्यान रखते हुए, आपके शरीर के अंदर और सांस के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं तब हमें पहचान, we will understand how to observe both positive and negative emotions. We will go through a practical exercise on this. Then the next step is labeling your emotions, whether it is happy, sad, angry, all of these are different labels, and rating your emotions on a scale of 0 to 10. Then how high is your emotion? Yeah. तो जब हम बोल रहे हैं कि निरीक्षण करना, आपकी भावना क्या है, आप निरीक्षण जब करते हो तब आप उसको समझ के अपने समझो, देखो मुझे क्या लग रहा है, मुझे, मैं दुखी हो रही हूँ, तो कितना नंबर देंगे? अगर 0 है मतलब बिल्कुल दुखी नहीं है, 9 है तो बहुत दुखी है, ठीक है। वैसे आप मन में आप सोच के उसको खोजो और समझो कि कितना नंबर दे रहे हैं आप। Okay. So we will share with you a simple 5-step process for increasing your emotional intelligence. Okay. So we will learn to do this both with a negative example in our life as well as with a positive example. So in the 5-step process for increasing your emotional intelligence, we will first tune in and write down any negative incident or positive incident that you're experiencing. Let me first describe the process, then we will take you through a small example. Yeah. The first thing is the habit of journaling. Then we will learn to observe emotions. Then we will learn to use our breathing to relax our negative emotions. And then we will learn from challenges and the practice of gratitude. So these are the 5 steps that we will be sharing with you to develop emotional intelligence. Because we have a short time, we are trying to keep it as practical and give you a simple example. So let us look at each of these. What are the benefits of developing EI? Very important, facing challenges and problems effectively, dealing with daily stress, better physical health. Yeah, these are some of the examples. So let us go through some of the ways in which we can manage our emotions. Okay, so maybe what we can do, instead of continuously through the chat window, if any of you can write down what are some of the benefits you think you can have from learning how to manage emotions. Can you just put on your chat window? How can we get better when we learn to manage negative emotions? तो अगर हमें कुछ नेगेटिव थॉट फीलिंग्स हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम दुखी हैं या बहुत डर रहे हैं, लेकिन अगर लग रहा है कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, जब ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं तो हम इनके साथ कैसे काम करेंगे? ओके, आप अगर आप थोड़ा चैट इन में लिखेंगे कि आपको कैसे कैसे फीलिंग्स आती हैं जो आपको हेल्प नहीं करते, आप लिखेंगे थोड़ा नेगेटिव और इमोशंस, उसको संभालने से आपको क्या फायदा मिल सकती है, इसके ऊपर थोड़ा रिफ्लेक्शन कीजिए। आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि नेगेटिव इमोशंस को संभालने से आपको कैसा फायदा मिलेगी। ओके। तो आप लिख रहे हैं एनालाइज योर फीलिंग्स, ओके। तो आप लिखिए कि कैसे नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं आपको कभी कभी, और हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग योर नेगेटिव इमोशंस। जस्ट आपके अंदर जो भी आइडियाज आ रही है आप चैट विंडो पे डाल दीजिए। Students, Yes. ଆପଣମାନେ ହଁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି resource person?
आपण कौन इमोशंस अच्छी कौन नेगेटिव इमोशंस अच्छी केमती आपण माने ताकू टैकल करिवे कौन सब फीलिंग्स होउची व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आप लिख दीजिए, आपकी नोटबुक में लिख दीजिए, और शायद या राइट चैट विंडो में डाल दीजिए, वरिड अबाउट एग्जाम। हाँ, यस थैंक यू दुर्गेश जी। आउ कौन एंजाइटी होथबो लिखंतु आपको कब एंजाइटी आती है? We feel it. इफ वी फील इंसल्टेड। वेरी गुड। या ऐसे एग्जाम्पल्स थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए और चैट विंडो में डाल दीजिए। When do you feel sad? When do you feel angry? When do you feel stress? Sadness for exam preparation. Percentage secured in the exam. Yes, correct. इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? ओवरलोड। सो ओवरलोड का मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ, स्ट्रेस, करेक्ट। फियर, very good. Give some more examples, and now we will look how can you manage this. We should keep our mind in silent. वो आसान है? Overthinking, yes, correct. Overthinking can cause. हाँ, हम ये सबको कैसे एड्रेस कर सकते हैं? Yeah. So let us, you can keep typing in your chat window if you want. And so let us look at one very powerful tool that we can utilize, a very how to control depression. Yeah, by yoga. Yes, correct. So India has many, many pranayams. Yeah, pranayam is definitely one way in which we can control our emotions. So let us look at a very simple breathing technique. See, we have our daily pranayam. या वी हैव आवर डेली प्राणायाम्स, जो हम शायद आपके स्कूल में भी करते हैं। एक दूसरा जो हम दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे अभी, इट इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज एनी टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग अ नेगेटिव इमोशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज योर ब्रेथ। आपके सांस के साथ जब भी आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन आप एक्सपीरियंस करते हो, तब आप अपने सांस को यूटिलाइज कर सकते हो, अपने सांस को उपयोग कर सकते हो। ब्रेथ इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। इट्स नॉट जस्ट प्राणायाम इन द मॉर्निंग। शायद आपके हमारे स्कूल में हम एक सिखाते हैं बच्चों को, कभी कभी एग्जाम के बीच में बच्चे भूल जाते हैं, तब हम सिखाते हैं कि अ फ्यू, उसको हम रिलैक्सेशन ब्रीदिंग बोलते हैं। अ फ्यू ब्रेथ्स आप ले लो, उससे आप अपने फियर को कम कर सकते हैं। ओके, अपने फियर को कम कर सकते हैं। सो एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आपको सिखाएंगे हम। वेरी सिंपल, इट इज ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज एंड एक्सेलिंग थ्रू द माउथ। सो सांस लेते वक्त जैसे अगर हमको टेंशन है, भयो माडिले, हाँ, सो व्हाट वी कैन डू इज, जब आप एग्जाम भी लिख रहे हैं, ओके, कुछ बात कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा आंखें बंद करके मुंह नाक से श्वास लीजिए और मुंह से एक्सेल। मुंह से श्वास छोड़िए। सो एक डीप ब्रेथ, ये कभी भी कर सकते हैं आप। मीटिंग में कर सकते हैं, आपके एग्जाम में कर सकते हैं। कभी कभी किसी ने लिखा है कि कभी कभी हमें कुछ बुरा लगता है, टीनेज इश्यूज, आजकल सोशल मीडिया का बहुत सारा इश्यूज है। दिस सिंपल एक्सरसाइज कैन बी डन एनी टाइम। या डेली प्राणायाम हेल्प्स यू बिकम स्ट्रोंगर। उससे ऑन टॉप ऑफ द डेली प्राणायाम आप इस सिंपल रिलैक्सेशन ब्रीदिंग को यूज कर सकते हैं। वी विल जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स। आपके आंखें को बंद कर दीजिए और ब्रीद इन थ्रू द नोज फुल्ली, नाक से पूरा सांस लीजिए पूरा, और एक्सेल विथ योर माउथ ओपन। मुंह खोल के हाँ सांस छोड़िए।
we'll do this a few times. Very simple. इसके लिए कभी कभी just 20 seconds, 30 seconds में we will bring oxygen to the brain and we will start releasing our negative emotions. So a very simple way to release negative emotions is with this relaxation breathing. Breathing in through the nose and exhaling through the mouth. एक और टूल है जो आपको हम सिखाते हैं, उसके बारे 1 second is journaling. हमारे स्कूल में बच्चे एंड ऑफ द डे रोज जर्नल करते हैं. जो उसमें वो जर्नल करते हैं कि आज क्या अच्छा हुआ और आज व्हाट वाज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, दोनों लिखते हैं. कौन दिन के अंत में हम सोचते हैं कि आज का दिन कैसा गया, क्या अच्छा गया, क्या हुआ, जो टेंशन हुआ, हम सब वो लिखते हैं. गोटे बोही, एक किताब लीजिए, एक पेपर लीजिए, कहीं भी आप लिख के जस्ट सोच के थोड़ा लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा. So journaling is a very simple process. It increases your awareness. कि क्या होता है कि कभी कभी एक घटना होती है जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसके ऊपर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं. Have we all experienced this sometimes? Yeah. So journaling is a way in which आप उस घटना को हम लिख सकते हैं. बाद में आप उस पेपर को आप काट के यू कैन थ्रो द पेपर. आप उस पेपर को हमेशा नहीं रखने का, पर यू कैन जस्ट राइट इट and express yourself. Through that expression, you feel better. So you can release the negative incident that has happened through journaling. सो जब कभी कभी जो हमको बहुत दुखी होते हैं या सैड होते हैं, जैसे आपने किसी ने लिखा था कि समटाइम्स यू आर इन लव विद समबडी, अगर वो काम नहीं होता है ना, ऐसा सब भी होता है ना. तो ये अगर होगा तो आपके दिमाग में पूरा दिन, 2 दिन, 3 दिन आपके दिमाग में ऐसे बैठा रहेगा कि अच्छा ये ऐसा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसे सब दिमाग में चलता रहता है. तो जब हम जर्नलिंग करके लिखते हैं, যদি କିଛି বহিলে ଆମେ लिखिबो तो गोटे एक्सप्रेशन होची, हमारे दिमाग से वो पेपर के ऊपर आता है, थोड़ा वो कम हो जाता है, हमारे मन का जो भार है, जो दुख है, वो कम हो जाता है जब हम गोटे बहिरे आमे लिखिबू. तो भलो एटा गोटे एक्सप्रेशन को होचंती. Yeah. So we have 2 things. One is to journal anything that you are experiencing that is negative, and then it is to take relaxation breathing, deep breaths. Inhale through the nose, exhaling through the mouth. These are the first 2 steps. Yeah. So I'll come back to this. We'll come back to our 5-step process here. Okay. So पहले हम एक स्मॉल एक्सरसाइज लेते हैं. आप आपके जीवन में एक नेगेटिव इंसिडेंट आप लीजिए. गोटे थर गोटे प्रैक्टिस करिबो. हाँ, एबे मैडम कहउचंती 5 स्टेप्स अछि. ओके, से स्टेप स्टार्ट करिबा पाई जस्ट थिंक अबाउट, गोटे थर आप एक बार सोचिए कि आपके लाइफ में क्या नेगेटिव इंसिडेंट है. यू कैन जर्नल इट, या अभी इस सेशन के लिए आप उसके बारे में सोचिए, आंखें बंद करके जस्ट think of a negative incident. We will actually release it. Think of a simple negative incident that has happened and closing your eyes, think about it and then observe आपके अंदर क्या भावनाएं हैं. Just आंखें बंद करके आप इसके बारे में पहले सोचिए, क्योंकि हमें इसको रिलीज करेंगे. पहले एक जो आपके अंदर कुछ हुआ है जो आपको पसंद नहीं है उसके बारे में सोचिए एंड आप ऑब्जर्व कीजिए हमारे अंदर क्या भावनाएं हैं. Are you sad? Are you angry? Are you frustrated? Are you disappointed? Are you stressed? जो भी है आप उसको ऑब्जर्व कीजिए.
Show the screen. आपकी बॉडी को नोटिस कीजिए। इस घटना के बारे में आप जब सोचते हैं, आपके अंदर कैसे भावनाएं हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। अभी हम रिलैक्सेशन ब्रीदिंग शुरू करेंगे। 21 ब्रेथ्स लेते हैं। ब्रीद इन थ्रू योर नोज फुल्ली एंड एक्सेल विथ योर माउथ। थोड़ा सांस लीजिए एंड ऑब्जर्व। आप सांस लेते लेते व्हाट इज हैपनिंग टू द इमोशन। As you breathe, your negative emotion can relax. The fourth step that we are going to bring is learning from challenges. हमारे जीवन में जो भी दुर्घटना होती है, हमें उससे कुछ सीखना है. So when we observe our emotions and we relax the negative emotions, we can then think about that situation clearly. We can think about that situation and think, what do I have to learn from this? इससे मुझे क्या सीखना है? इस माइंडसेट से जब हम नेगेटिव इंसिडेंट्स को देखते हैं, सब कुछ हमारे लिए लर्निंग हो सकती है. जो भी नेगेटिव इंसिडेंट है, उससे हमें कुछ सीखना है. The fourth step in the process of developing emotional intelligence is learning from challenges. ଯଦି ଆମକୁ କିଛି असुविधा होची, କିଛି दुख होची, भय मारुची, तो जब ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम पहले जर्नलिंग करते हैं. ठीक है, गोटे बही रे आपण लिखिबु कोन होची, केमती लागुची, काहेकि एमती के माने किछि कहिलेनी, कोन हैला, आपण लिखिबु. तापरे आपण देखिबु कोन फीलिंग आसुची. हाँ, ऐसा क्या फीलिंग है जो मुझ में आ रहा है. कभी कभी हम दुखी हैं, सैड है, लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं. ऐसे ऐसे बहुत अलग अलग के फीलिंग्स आते हैं. हम उसको निरीक्षण करूछंती. ठीक अच्छे, आपण देखिबु कोन होची, केमती लागुची. एटा गोते थर वंस वी नो व्हाट इट इज, जब हमको समझ में आता है कि हमको ये फीलिंग आना है, तब हम रिलैक्सेशन ब्रीदिंग करेंगे, जो अभी मैडम ने सिखाया था. नाक से मुंह ब्रीद लेंगे, श्वास नेबो, मुंह खोलिकी आपण छाड़ी देबो. एटा 21 थर करिबो. ठीक अछि, 21 टाइम्स करिले आपनकर भावना सेटा स्मॉल सानो सानो है कि जिबो. Yeah. So sometimes if the emotion is a lot, you may need 21 breaths. Sometimes even 3 breaths or 9 breaths is enough. यस, सो ऐसा नहीं कि 21 बार करना ही है, 3 बार 9 बार करिले आपनको सेटा चेंज आपनको महसूस होबो, आपण अनुभव करिबो. तापरे हमर लाइफ रे किछि हमको गोटे चैलेंज थिले, मैडम कोन कहिथिले कि हमें सिखिबु. जदि एग्जाम मार्क्स बोलो आसीनी, तो हम कोन करिबु, मो कोन सिखिबि, मो केमती नेक्स्ट टाइम पढ़िबि. जदि किछि चैलेंज आसिले, के माने रागुचंती मो उपरे, मो कोन करिले, मो केमती बिहेव करिले मोर ऊपर से माने रागिबुनी. दैट इज लर्निंग. केमती सिखा होबो. ये स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, ये टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, किसी के भी जीवन में हमें चैलेंज आती ही रहती है. पर जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस को अच्छी तरह से संभालते हैं, हम उस चैलेंज से सीख सकते हैं. जदि बापा माँ टीचर माने के माने रागुचंती, आमे एटा सबु करिबा. हाँ, जर्नलिंग करिबा, तापरे देखाबो कि कोन इमोशन अछि, हमें बुझी पारिबो. तापरे रिलैक्सेशन ब्रीदिंग करिबो. तापरे हमें सिखिबो कोन केमती मो करिले एटा बापा माँ और टीचर माने रागिबुनी. हाँ, हमें देखिबा केमती हमें बुझिबो
কেমতে আমি লার্ন করিব। When we have not released our negative emotion, our mind is not free. That is when we do overthinking. किसी आप में से चैट विंडो में किसी ने लिखा है कि हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम ओवरथिंकिंग कर सकते हैं। सब आदमी जब हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस है, हम ओवरथिंकिंग ही करते हैं। उसके लिए ही हमें थोड़ा नेगेटिव इमोशंस को संभालना और उसके छोड़ने का प्रैक्टिस करना चाहिए। Through relaxation breathing, you can release the negative emotion. When your mind is clear, तब हम उससे इस चैलेंज से क्या सीखना है हम सोच सकते हैं। तो हम अपना दिमाग को पीसफुल रखना है, शांति रखना है, काम रखना है, तब हम हमारा दिमाग थोड़ा खाली होगा ना, जब हम इससे सब करने से, तब हम अच्छी चीजें सोच पाएंगे। और ओवरथिंक मतलब ज्यादा उसी बात को सोचते रहना, ये सब करने से वैसे होगा नहीं, आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। हाँ, जब हम एक दुर्घटना से भी हम सीख सकते हैं, then we will start experiencing gratitude. ग्रैटिट्यूड एक वेरी पावरफुल प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस से हम ग्रैटिट्यूड दूसरों के लिए, ग्रैटिट्यूड अपने लिए, ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन के लिए। Madam, can I break for a minute? Yes, please go ahead. Madam, actually from your end, the screen Yes. share, there are some lines on the screens, so that students are doing. So can you please, your technical person, to stop the, what is this, annotations? Lines there? Okay. To stop the annotations, disable Stop the annotations. annotations. Acha, Yes. acha. Okay, Yes. done. So disable Yes. annotation. Yeah, sorry about that. Yeah, Yeah, think- otherwise students will just. keep doing that. Okay, okay. Yeah. Thank you, thank you. Thank you, So ma'am. we have learned something from this challenge now. Thank you. Okay, I was wondering where it's coming from. हमने Yes, हमने yes. सोचा कि कहीं और से आ रही है. Anyway, thank you. We've learned now that we should disable annotations. So thank you. Yes. Thank you, ma'am. Yeah, yeah. Spotify. So the fifth step for developing emotional intelligence is the practice of gratitude. जब gratitude immediately puts you in a positive state, gratitude to others who help us, gratitude to ourselves. जब हम अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, हम उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं। Gratitude to life, इस जीवन हमें मिली है अच्छी तरह बिताने के लिए, उसके लिए भी हम कृतज्ञता, gratitude बोल सकते हैं। Gratitude to the world. And very interesting, the more we develop emotional intelligence, we start saying gratitude to our challenges. क्योंकि उसके बिना there is no growth. So being able to say gratitude to our challenges is really very, very empowering and freeing for every one of us. जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कुछ असुविधा होता है, तो हम उससे बहुत सीखने को मिलता है। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं होते ना, तो हम ज्यादा सीख नहीं पाते। तो इसीलिए हम एक्चुअली आभार होते हैं कि हम किसी के लिए हम आभारी हैं, किसी ने हमको हेल्प किया। नहीं तो हमने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मुश्किल से कुछ काम किया, तो हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड देते हैं। That's okay. हाँ, ओके, वैसे उसको बोलते हैं आभार देना। ठीक है, तो आप यकीन मानो कि कभी कभी हम जिंदगी में हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे भी बहुत सीख के और अच्छा बनते हैं। तो प्रॉब्लम्स के लिए भी हम बोलते हैं कि ठीक है, ये प्रॉब्लम हुआ है, मैं इतना कुछ सीखी हूँ, इसके लिए भी आभार। So when we learn how to manage our negative emotions, and we learn from challenges, we can give gratitude to life. It brings us strength, it brings us resilience. तो जब हम अपने आप को समझ पाते हैं और हम हमारे नेगेटिव फीलिंग्स, दुख हो, भय हो, कुछ भी ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उससे हम सीखें, तो हम अपने प्रॉब्लम्स के लिए भी हम आभार दे सकते हैं, लाइफ के लिए आभार देते हैं। Okay? Yeah. So I think we will pause now. If people have questions, I will leave this slide there. Yeah. You can unmute and ask any question. Or you can type it on the chat window. And we will be able to answer that also.
there are many techniques for emotional intelligence, पर इतना ही हम 45 minutes में जो share कर सकते हैं वो हमने share किया. Thank you. Yeah, please go ahead. Please ask your questions. तम मनकर जदि किछि प्रश्न अछि रिसोर्स पर्सन्स लाइन रे अछंती से माने वर्तमान तमरो क्वेश्चन को रेस्पोंड करिवे. सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस. Other ways to increase EI. Madam, Yes. actually I have a question. Yes. These days actually we see stress of many different kinds, Yes. and that really impacts our life. Yes. And being a professional, and I used to go to many schools, institutions, and individual students. So Yes. here we could see there are suicidal tendencies and suicides happen by teenage students right now. Correct. And Correct. in recently, in 2-3 months back, it's maybe last 2 months, there is a suicide of a teenager on a different issue. So this is now growing up. So Yes. is there any tips for our students? Yes. So when you feel something bad, something negative thought comes to your mind, how could you just practically any tips to manage the situation? Absolutely. So I'll answer this in two ways. Two things I'll say. One is our day-to-day pranayama helps a lot. Yeah. Day-to-day releasing with yoga and pranayama, that helps. The second is what we have written here. See, sometimes even though people are doing pranayama, when a durgatna happens, the stress builds too much. For that, we need to acknowledge our negative emotions, and we need to go through the 5-step process. So what happens is somebody becomes suicidal when they have kept the negative emotion for a long time. जब हम हमारे schools में, हमारे office में और हमारे जीवन में, we take a little bit of time. End of the day, morning we do pranayam. That will help put your body in a good positive state. End of the day, do some journaling and then observe. हमारे अंदर, we have actually forwarded a small video with different types of emotions जो आप distribute कर सकते हैं, and you can observe and see what are the emotions I'm having, and do relaxation breathing in the night, breathing in through the nose and exhaling through the mouth. In the night or in the evening, end of school, end of the day in school, when the children learn to release the negative emotions, the negative emotion will not build up. This is the best preventive to stop suicide. Suicides are extreme conditions where the negative emotion has built up so much, the person is not able to have any hope for life. So एक तो preventive healthcare. Preventive healthcare के लिए 2 चीज हमने बताया. One is pranayam in the morning, and दूसरा ये 5-step process. Yeah. That is for the preventive healthcare. And of course, if somebody is in an extreme state, we may need to consult a counselor or a psychiatrist. If there is too much built up, we may need to take professional help as well. दोनों है, आजकल बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम ये सब शेयर करने के मौका आपने दिया है हमें, उसके लिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि this is important for children today. आजकल children have to learn how to manage negative emotions. Just one small challenge, they are thinking about depression and suicide. ये अच्छा नहीं है, सबके लिए अच्छा नहीं है. So we have to know that by managing negative emotions, we can definitely learn from challenges. एक failure हुआ तो क्या? When we are able to learn from it, we can definitely succeed next time. ऐसा mindset भी हमें youth में cultivate करना चाहिए. How to handle failures is a very important mindset that we have to develop. Nice. We see that Priyadarshan Tripathi ji has written from GBHSS, Kaduapada. Very true. So breathing, yoga for anxiety. Yes. Yeah. Yeah. See, breathing and yoga and this process. See, sir, breathing and yoga is one part. Like I said, sometimes you may have to release specific negative emotions. Apart from that, if the condition is extreme, you must see a psychiatrist and they may put on some medicines. But many times, lot of things can be handled through this itself, through a daily practice. ये रोज का हम एक बार स्नान करने के बाद दूसरे दिन
भी स्नान करते हैं ना, ऐसे ही प्राणायाम योगा और जो 5 स्टेप प्रोसेस हम बोल रहे हैं, एंड ऑफ द डे जर्नल करो, एंड ऑफ द डे ऑब्जर्व योर नेगेटिव इमोशंस, एंड ऑफ द डे रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस, लर्न फ्रॉम द चैलेंजेस एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है। या Thank you. Let's show the so yeah, any other question? Madam, can we see the video? Yes, we can. Yes, It's we just can. a video of all the negative emotions. We have Yes. sent it to all of you, but Madam, we there have, is a question. yes, go ahead. Madam, it is in the chat box. How to deal with the situation of Losing losing someone someone dear. Yes. very dear yes. for us. Yes. When we lose someone very dear for us, we feel very, very sad. So I would answer first, write down your sad feelings through journaling, and then take a lot of deep breaths to release the sadness, and then remember them with gratitude. Somebody who's very dear for us, the more we express gratitude, we will feel better. So it is through releasing the sadness and practicing gratitude that we can deal with the situation of losing someone very dear to us. Yeah. Any other questions? We'll take, and then we'll give the. Shall we go on to? We have given everybody, we've sent you a document with the 5 steps for cultivating emotional intelligence. But now we'll show a video on different types of feelings. Yeah, 1 second. One more new message. It is seen that students are engaged in mobile phones and emotionally, they're showing some lacuna. How to deal with this? No more than 30 minutes a day. ये हमारे स्कूल में more than that of mobile phones today, it is affecting our brain. We have to understand that there has to be a certain limit. 30 minutes से ज्यादा स्क्रीन को मत देखना, ये हमारे स्कूल्स में सिखाना चाहिए. In our school, we do not allow the cell phone. Only 30 minutes in the evening, we allow them. We have a residential school. 30 minutes in the evening is the maximum that anyone can use. And isse we found the children are actually becoming much sharper again. They are able to manage themselves better. Because also through social media, many negative emotions are spreading. Yeah. Any other question? We have. Sweet. Yeah. So please, we have sent a handout with the 5 steps. You will only realize the benefit of it when you practice it. When you actually try it out and you know that I have the power to change my negative emotions, that is really wonderful. That will give you a lot of strength. Yeah. So we'll go ahead and show the video now. Yes. Okay. Basic in We can also post a link to the video in case you have. Yes, madam. Please. Post it in the chat window, please.
Thank you. जब हम उड़ीसा आए थे, we had yeah, this is done. So we had worked with the teachers to introduce a small activity in schools to just help children understand emotions and be able to express this. बस उतना ही. जब हम ऐसे activities regularly करते हैं, then we will find that emotional intelligence grows and we are also able to learn how to manage ourselves better. This is an important aspect that we wanted to bring up. And in higher secondary, it's even more important. Because exams का stress है, negative emotions release करने के लिए और manage करने के लिए, learning from challenges, resilience का, इसको हम resilience बोलते हैं अंग्रेजी में. ये सब, these are very important skills for success for everybody, students, adults, people in the government departments, people, administrators, teachers. In today's world, this is one of the most important skills. And the skills required for being emotionally intelligent is please practice these 5-step process, which is foundational to We well-being. have sent it to you in a document. You take it, write down a negative incident, release it, learn from it, and see how much better you feel. Yes, ma'am. We'll share it in the group. Yes. We'll share the document, the video, as well as your PPT. We'll share Thank it in the you. group so that Yes. it will be beneficial for students. Yes. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you for this opportunity to share. Yeah. I just wanted to say that we do this every day in our school and it has really helped our students. They are much calmer because of this. So thank you. Thank Okay, you. madam. So Yes. we are at the close of this session. Yes. So today we had a very wonderful topic for discussion in this webinar. And I hope the students and other all principals and we all who are sitting here are benefited from this webinar session. I would also like to thank all the students and principals who are participating in this program. Thank you all. We'll meet in the next section. Okay. There is a question here that's, I don't know. Should we answer that, ma'am, or shall we let it go? Yes, ma'am, please. Yeah, okay. So it says, why is it said that dealing with adolescents and children is like standing on the volcano? Because adolescents have a lot of emotions. Adolescents hormonal changes होता है puberty के कारण उनके अंदर बहुत ज्यादा भावनाएं होती है. इसीलिए they say that adolescent children, for adolescents, this kind of a practice will really help. You'll find that when they are able to practice managing their emotions, it is no longer dealing with a volcano. They too can be calmer. So, thank you. Thank you very so much. Thank you. Thank you. Namaskar. Yeah, thank you.